So today we are starting a new topic, that is Forex and international banking. Both the topics are interlinked with each other, and today we are going to travel the world. So let's begin the session. So guys, why this Forex is so important and why international banking is so important, that is the first thing that should come in your mind. Forex means foreign exchange, right? Means when we exchange our currencies. And international banking is the mean of doing the transaction amongst the countries. So why they are so important? The most important thing and the philosophy behind this was globalization. All these things, all the connections between one country with another country, it started with globalization actually. So let give you a bit story of historical perspectives as well. Few years back, or I would say many years back, all the countries they used to be quite protective. They were not doing that much international trade. But slowly and steadily, as industrial revolution took place, we needed markets to sell, and we needed raw materials to the production of the things. So for these raw materials and for the markets to sell, we had to explore the world. So because of this industrial revolution, the entire world became one single market. And that led to globalization. Means when the entire world act like a single market, entire world is just like a village. It's a saying that the entire world is one single village. Absolutely, entire world is one single market. So that is why all the countries needs to be dependent on each other. This is one thing. Second thing, God made this earth. This is earth. You know, this earth in a way that the resources are distributed in very unorganized manner. Means if I would say silicon is more under, you can say, if one matter is found in one country, then another matter would be found in another country in abundance, I would say. For example, crude oil is found in Gulf countries, so in Gulf countries other resources and agriculture commodities are not available. So God had intent that we humans we need to be dependent on each other. Means no country today in today's world can be self-reliant. This is globalization when we need to be dependent on each other. So because of this globalization, guys, all the economies they are dependent on each other for trade, and because of this globalization, trade take place, international trade, right? Capital flow takes place, means money from one country to another country, money can come in or can go out of a country. Technology, new technologies can come. Today I'm using Loom, for example, to teach you, right? So the thing is that over here, what is happening that I am using technology made in USA, sitting in India. So I am teaching you online, right? So it is I am using the best technology available in USA, sitting in India, and delivering you the lectures. So see, it is just, and those people sitting in USA, they are doing yoga, which was founded in India. So just imagine, guys, it's the technology, it's the best of all. Means today, you, me, we are using the best things available in the world. We are using YouTube, right? YouTube is again not Indian technology. It was and it is technology of from USA. So still the entire world is getting integrated. So the positive impacts of this is it leads to economic growth. Absolutely, we'll get better markets. For example, if I was earlier selling in a small village, then I started selling my product in a city, then in India, then in the entire world. Just imagine the market. I have immense market, guys. So see, so it can lead immense growth to the companies. If you see the financial statements of the international or MNC companies like Apple, PepsiCo, guys, these they earn revenues which are much, much, much greater than the GDP of the countries itself. So see, this is, how much exponentially you can grow, right? Innovation, we can learn from each other, we can grow, we can learn, we can take the technology of other countries and use it for our productivity. This is what I am doing right now. This is what you are doing right now, right? Now, similarly, foreign investments, FDI and FII will be coming.
in the country, within a country. So I will be discussing FDI and FII again in the coming slides, but it is the capital flow that takes place within a country basically. But it comes with drawbacks. The drawback would be the least efficient people, the least efficient companies will get, they have to face a lot of competition. Means when you open up for the global world with global trade, the competition increases. So those now who are, inefficient, they will lose the jobs, they will lose, their businesses like that. So it will lead to losses. People will lose the job, right? Outsourcing of cheap labor. For example, USA is not producing anything in their own country. They are outsourcing the things to Vietnam, to China, to India, Bangladesh, because over here the labor is very, very cheap. I hope you're getting the point. And it will lead to inequality as well. Inequality in the sense, you know the countries who are big, they will have better advantage. The countries who are located geographically in a good, at a good, geographically location, they will have better advantage. Means if a country is located near to sea, it will have better advantage of, international trade. If the country is landlocked, so it will have, a disadvantage, that it will become very difficult for that country to do the international trade, because international trade takes place using, via sea. Using airlines would be too costly for any company. I hope you're getting the point. So why, what is the theory, what is the reason behind it, why we are doing international trade, and is it worth it? Means, can't any country be self-reliant? So let's answer these questions, guys. So there are two theories basically. One is absolute advantage theory. Second is comparative advantage theory. So one reason I already told you, because God had this intent to create the world in a way that all the resources are distributed ununiformly. If crude oil is present in Gulf countries, so China will be having more mineral resources, India may have more wheat and rice. So see, so we don't have crude oil, we don't have that much mineral resources. So if we Indians, we are selling wheat and rice to Gulf, we are buying, crude oil from them. So we have to be dependent on each other. So this is one thing, because God itself, had the intent to create the world in a way that, all the resources will be distributed ununiformly. Reason number one. Reason number two, it's absolute advantage. Means by using minimum inputs and creating maximum outputs from, from those minimum inputs, all the countries have some advantage in that. For example, if Germany can produce better automobile, right? If China can produce better tech products, maybe Bangladesh can produce better clothing products. So why to waste energy, you know, in producing machinery if you can produce good clothes? Let's take example of Bangladesh. Bangladesh can produce good clothes. So why Bangladesh should waste energy in machines, producing machinery or producing high tech things like China? Instead, they should focus more on producing clothes, export that, and import the other stuff. And machinery and other things you can import. What I want to say, if you are good at one something, if you are efficient at one thing, why to waste your resources, your inputs in those things which are your weaknesses? Like, Bangladesh cannot produce good machinery or good tech or good IT services. Instead, on contrary, they can produce good clothes, good t-shirts, good, good wearables. So they should not focus on the weakness. They should focus on the strength. This is what absolute advantage theory say. Means in whichever thing you are efficient in. Means Bangladesh can, you can, produce clothes using minimum resources, and they can produce maximum output from that. That is absolute advantage. Means it is, no one can compete it. They are best, they have highest competence in this. So if you are having a competence in anything, you should straight away produce it and export to the world, and don't focus on the weaknesses. Means let's take example of India now. Now, for example, India is having good competence in IT sector, right?
So why we should do the things which we are weak at. For example, why we should be, trying and push ourselves so much, into creating some clothing which can produce, which can really, damage our environment. If we are good at pharma, why should we should export these things instead of, focusing the direction in those places where we are weak at. I hope you're getting the point. So, absolute advantage theory says the thing or any activity which you have the highest competence, which you have highest efficiency, you should export that, and you should not focus your energy on the weaknesses. Instead, you should straight away import that. You should straight away buy it. I hope you got the point. So this is reason number one. It's a good reason, valid reason. Why to waste your resources? Why to waste your energy? Now, absolute advantage theory is not applicable in the real world. Basically, absolute advantage theory is directly using two concepts. One was input, another is output. Means you should use minimum input to produce maximum output, means efficiency. So it is more focusing on efficiency. Whereas comparative advantage says opportunity cost. It talks about opportunity cost. What I want to say over here, for example, maybe let's take example of USA. USA could be best in all the things. USA could be best in technology. USA could be best in machinery. USA could be best in military equipments. All the things. USA is best. America is best in all the sectors. But guys, still there is opportunity cost. Let's give you an example. Maybe USA is good at making these airports, and USA could be good in making these iPhones, right? Now, if USA focus is more on producing this iPhone, they are deploying resources, raw material, plant, equipment, and all the things that is occupied here. So it involves the opportunity cost. But if everything is focused on producing iPhone, they may not produce this iPod. You're getting the point. They may not produce this airport. What is happening over here? I am focusing my energy, my material, my resources in wrong direction. So everything comes with an opportunity cost. So what competitive advantage says that even if you are good at many things, you may compromise on one or another thing. For example, if I produce iPhone, I will lose AirPods. Means I can't produce this thing because the labor is the labor is limited. Resources are limited, right? So if I focus my energy in producing these AirPods, I may miss out this. Now, how to choose which one to produce? This comes with opportunity cost. It says comparative advantage says even if the country is good at producing many things, or maybe all the things, still it has to drop down few things based on the opportunity cost. If the opportunity cost of creating this iPhone is much less than AirPod, then what America should do? America should import airports. They should not waste their energy over here. Instead, use all the resources in producing iPhones and export it. I hope you're getting the point. So, whatsoever commodity or product is having the minimum or very less opportunity cost, the country should be focusing on that. And rest, the other commodities or other things, they should be importing from the other country. Why to waste your energy? So this comparative advantage theory is practical. This comparative advantage theory is something which is used in your day-to-day lives. I hope you're getting the point. Now, if I summarize the things, if I summarize both the theories are focusing on one thing, that you should be efficient at one thing, and you should not focus much on the weaknesses. So instead, you're focusing much on weaknesses. You should import that thing from another country, and you should focus more on producing the things which you are good at. And this thing can be applied in our day-to-day lives as well. We sometimes focus so much on our weaknesses that we forget our strengths. So we should focus on our strengths a lot. We should make them, we should bring our, strengths at that level that, it is, we are best in the class and highest competence. And yeah, we should keep working on weaknesses, but should not focus that much, should that you're focus, putting entire your resources into weaknesses only.
So focus more on strength. This is what these theories are saying over here. I hope you got the point, everybody. Now, because of globalization, because of international trade, we need international banking. Means if I am buying something from Africa, sitting from this, from India itself, I need I would say, I need to do some transaction. Means if I'm buying something, I have to send the money. And to send money, I need international banking system. It's not like that कि local bank से काम चल जाएगा. Means I need international banks. So let's give you an example for this. There are central banks. Every country is having a central bank. Federal bank is for USA. USA's central bank is called as Federal Reserve, right? There is ECB, European Central Bank, RBI, Reserve Bank of India, Indian Central Bank. So these are the central banks of the country, and they play a very important role. IMF is also an institution which plays an important role in monetary policies, right? Now, commercial banks. See, these are the central banks every country is having, right? Now, there are few banks for commercial, for private, but they deal in international things, international trade. So HSBC, Citibank, JP Morgan, you might have heard these names already, right? So these are international banks. They really, you can say, uh, they really try to encourage the international trade. Means they generally help the international trades, right? There are multiple corporations as well. These are the MNC companies like Toyota, Apple. So and they are traders as well who deal with forex, that we are going to discuss, how we can deal in forex basically. Now for example, guys, I am sitting in India right now, and I want to buy and I want to do a trade or transaction with a person who is sitting in Africa, right? I don't know that person. Firstly, that trade should be secure, right? What is the guarantee if I send money from India? How secure the transaction would be, and what is the guarantee that my money which I sent from India would be delivered somewhere in Sudan or somewhere in South Africa or maybe any African country? How I can make sure? So for this, I would like to tell you, you might have heard this thing in India as well. If you want to send the money to me, or if I want to send money to you, who is watching the class right now, you need to have this IFSC code, right? So if you don't have this IFSC code, you can't send your money to me, right? So it is 11-digit number. It includes bank number, bank location. It's alphanumeric, right? You might have sent money somewhere in NEFT or RTGS. You might have used those transactions. So for this, you need IFSC code. So this is for India. So if you don't have this IFSC code, you will not get the salary, or you will not get the transaction amount, whatever you're doing. So whenever you are getting into a new job, so the HR asks you what is the IFSC code of your bank, right? For that to become so precise that whatever money is sent, that money should be sent in your account at your location wherever you are living. Same case if I replicate in the world level. So there is a number called Swift number, and there is an organization that is Swift organization. It is just equivalent, just similar to IFSC code. The Swift number is a number which is used to do the international transactions. For example, I am sitting in India. This is me. This is someone sitting in any other country like Africa or maybe Russia, right? So if I need to send the money, there's so many channels that would be coming on the way. So I need to enter this Swift code. This is again 11-digit code, guys. The first four digits are the bank code. Next are the country code. Then comes the location, means where that exactly is. For example, this is bank code, where in which bank the money will be sent. Country means it is Russia or USA, or maybe in Russia. Then precise location, that would be maybe Moscow, and then the branch code within Moscow, which is the branch. So this is just similar to, if you remember, IFSC code. So Swift is a very important organization, guys, if I tell you. So this is website of Swift. So you might have heard recently when there is a war going on between Russia and Ukraine, right?
तो अमेरिका ने एंड ऑल द यूरोपियन कंट्रीज दे ब्लॉक्ड रशिया फ्रॉम स्विफ्ट। इन्होंने रशिया को स्विफ्ट से हटा दिया था। दे रिमूव्ड रशिया फ्रॉम स्विफ्ट। व्हाई? इससे क्या होगा? रशिया के जो बिजनेसेस हैं, द बिजनेसमैन ऑफ रशिया, दे विल नॉट बी एबल टू डू इंटरनेशनल ट्रेड। सी दैट पावर स्विफ्ट इज हैविंग। अगर स्विफ्ट आप नहीं चला सकते, फॉर एग्जाम्पल इफ सम कंट्री इज बैंड फ्रॉम यूजिंग दिस स्विफ्ट, राइट, the thing is that it will hamper their international trade, exports and imports as well. Payment ही नहीं हो पाएगी तो how the international trade will take place? I hope you're getting the point. So this is the official website of Swift, guys. It's that important. And if you see, you should go. Now they have started the payment gateways as well. जैसे हमारा payment gateway है इंडिया में, तो वैसे इन लोगों ने payment gateways भी शुरू कर दिए, where you can immediately or you can instantly transfer the money to some another country. So things are evolving. Innovations are taking place. Technology is evolving. So this is something regarding Swift. It is very important for international transactions, and this is website of Swift India. So see, we are privileged enough that India is having good relation with all the countries. So we do, and our Indian citizens basically, or Indian exporters, I would say, they do use these things. And once you enter into the arena of international trade, you will also get a chance to use this. So the thing is that Swift makes the international trade quite easy. I hope you got the point, everybody. All right. Now, SWIFT is for Worldwide Interbank. The full form of the SWIFT is Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. So let me make it simple. It is for we have connected all the banks of the world with one another. Earlier, Swift was used just to send the messages, right? To confirm whether the money is coming or not. For example, if I am sending my money to African country, so my bank will send message using Swift to their bank, and they will confirm, yes, this is the right bank you have approached, and then the money will be sent. Now, Swift had made their own gateways as well for the payments. So yes, it is evolving. More than 200 countries are part, and Russia recently was removed from SWIFT just because the Western countries, they wanted to punish Russia because of the war they did on Ukraine. Basically, it started in 1973, so it's historical thing, and headquarters is in Belgium. The core function, again, if I tell you, it is the most reliable way to send money across the world. Fastest, secure, and reliable. Reliable is very important. The banking system you are using, it should be quite 100% reliable and robust. Means अगर मैं यहाँ से पैसा भेज रहा हूँ, it should be a guarantee कि पैसा पहुंच ही जाएगा, because the transactions are quite huge in international. Whenever it comes to international trade, the transaction amount increases, right? So these are the few international banking key players. These are multinational banks, HSBC, Citibank, Charter Bank. There are many development banks as well, which have started by the groups of the country, like World Bank, like Asian Development Bank. Many countries, they come along and they start a bank to fund and to help each other, basically, and to help the countries in tough times. So these are the key players for the international trade and international banking. So I hope you got the point. We started from globalization. We saw what are the why the international trade is important, and now we are moving towards how this international trade takes place by international banks, international banking, and using the SWIFT. I hope you got the point, everyone. Now, what are the services these international banks do? See, कुछ services तो same है. The way I go to my, for example, SBI Bank or Axis Bank, the services are quite similar services, but these services are international and worldwide level. For example, cross border lending. अब मान लो, for example, I am an Indian, SBI is an Indian bank. अगर अफ्रीका का कोई इंसान एसबीआई से लोन लेना चाहेगा, why would SBI give to any person who is not citizen of India? सो ऐसे कंटेक्स्ट में जब इंटरनेशनल चलता है सब कुछ, व्हेन एवरीथिंग इज इंटरनेशनल, दे नीड टू बी अ बैंक हु ऑपरेट्स एट इंटरनेशनल लेवल. ऐसे बैंक होने चाहिए जहां पे कोई भी सिटीजन वर्ल्ड का, एनी सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, एनी कंट्री, राइट, they can go to a bank and take loan.
So that is why these multinational banks, they come, they help such kind of trades and the people who need loans. So whenever cross border lending takes place, मतलब आप किसी भी कंट्री के हो सकते हो and you need loan for international trade, and for example you are African, your bank is not giving you loan or you need some higher loan, you can't come to India to take loans, but you can go to these international banks to take loans. So you can take loans easily. You can take multinational loans as well. Multinational loans means, now if India, China, let's have a imaginary world. If India, China and Pakistan becomes friends, right? And we want to make a road which connects India, Pakistan and China, a good road, a good railway infrastructure. So we need to take loan. Now over here, three countries are involved. तीन देश हैं. So we need a international organization to fund this. I hope you're getting the point. So over here again, international banking system would come in, right? Now, trade finance. Now I am sitting in India, for example, right? But my trade takes place. I'm selling, for example, let's say I sell this paper, this piece of paper throughout the world. I sell it in Africa. I sell it in all the Asian countries, European countries. अरे इतने सारे जब countries involve होंगे, so I need to finance my trade. मैं कहाँ कहाँ से लोन लेता रहूंगा? मैं थोड़ा लोन मैं इंडिया से लूंगा, थोड़ा अफ्रीका से. Don't you think it will become so, complicated? So instead, what these central banks do, these international banks do, they make all the things centralized. कि आप एक जगह जाओ, वहां से लोन लो, so that you can fund the business throughout the world. तो इससे ये बेनिफिट हो जाता है, यू डोंट हैव टू विजिट डिफरेंट बैंक्स, तो यू कैन, बट दिस मेक्स द थिंग्स क्वाइट इजी. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. This letter of credit is quite interesting and very important to understand. It's very conceptual. Now, just imagine me as Indian, just imagine yourself as African. You are sitting in a country like Egypt, right? आप इजिप्ट में रहते हो and I am sitting in India. I don't know you, you don't know me, and I am buying something from you. मुझे क्या गारंटी है कि मैं आपसे जो खरीदूंगा, इफ आई बाय समथिंग फ्रॉम यू, आप उसे अच्छी क्वालिटी में भेजोगे ही फर्स्टली. चलो आपने भेज भी दिया. व्हाट गारंटी डू यू हैव कि जो भी आपने मुझसे खरीदा, वट एवर यू परचेज फ्रॉम मी, मैं आपको पैसे दे, जो आपने मुझे बेचा, आई एम सो सॉरी, जो आपने मुझे बेचा, व्हाट इज द गारंटी यू आर हैविंग दैट आई विल पे यू फॉर दैट? क्या पता मैं पैसे ना दूं, पैसे लेके भाग जाऊं. So for this international trade, right, that letter of credits. अब होगा क्या यहाँ पे, आपका बैंक और मेरा बैंक, यहाँ पे हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते. आई डोंट नो यू, यू डोंट नो मी, बट हमारे बैंक से एक दूसरे को जानते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में. तो आपका अफ्रीकन बैंक और मेरा बैंक एसबीआई फॉर एग्जांपल, वो आपस में बात करेंगे कि अच्छा आपका इंसान, योर 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 सिटीजन इज डूइंग ट्रेड, डू यू टेक गारंटी? बैंक बोलेगा हाँ आई टेक गारंटी. एसबीआई मुझसे बात करेगा, हम तुम्हारी गारंटी दे दें? हाँ जी दे दो जी हमारी गारंटी, हमारा ट्रेड हो जाएगा. अब यहाँ पे दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल गारंटीज विच बोथ द बैंक गिव. चलो अब बैंक की गारंटी है, आपने मुझे प्रोडक्ट भेजा, यू सोल्ड योर प्रोडक्ट टू मी, इट आई रिसीव द प्रोडक्ट, आई चेक द क्वालिटी, इट्स ओके, आई विल गिव एनओसी टू द बैंक. ठीक है जी, ये बिल्कुल सही है. एंड माई बैंक विल डू द पेमेंट्स टू यू, मीन्स टू योर बैंक. मेरा बैंक, अगर मैं भाग भी जाता यहाँ पे, इफ आई रन अवे, इफ आई डिफॉल्ट एज वेल, द बैंक इज लाइबल टू पे द मनी टू द person who did the export basically. So my bank took the charge और मेरे बैंक ने आपको पैसे भेज दिए. दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क आउट. आई होप यू गॉट द पॉइंट. हाँ, बैंक मुझसे पैसे बाद में भी ले सकता है, मुझसे पैसे तभी भी ले सकता है. हाँ, बैंक विल चार्ज सम एक्स्ट्रा फी, that's fine, because that fee is coming on, the trust that bank is building. Firstly, the security bank is giving, that is how it works. Now the banks could be different, or bank could be of the same branch as well. It could be SBI, both the sides, international SBI. It could be some international bank, or it could be local banks as well. But they will take the credit, and in this case, the bank is taking the guarantee. So this is called as letter of credit. Ensure the payments for exporters, means इससे पैसा मिल ही जाएगा exporter को. Bank guarantees, again I told you the same thing. Bank takes the guarantee. If international trade is taking place,
we take the guarantee that people won't my the seller won't run away. Why? Again, guys, if you anyhow, even I don't know you, वी आर इंडियंस, तो मुझे क्या पता अफ्रीका या रशिया या चाइना में कौन कहाँ पे कैसा ऑर्डर दे रहा है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दैट इज. So for that, banks comes and bank secures. They make the contracts basically. So, so this is, and banks do international, for this, actually what local banks do international tie-ups. SBI का tie-up international banking banks के साथ होगा, so that, their customers, they don't face such issues. I hope you're getting the point, everybody. Okay. Now, foreign currency accounts as well means अगर मुझे डॉलर्स में पैसे चाहिए and मुझे डॉलर्स में पैसे भेजने हैं, so well, maybe I'm going somewhere outside of my country, from India, for example. So there would be some branches who are available over there, right? If not branches, so SBI would be having some accounts throughout the world. You might have heard the word Nostro and Vostro accounts. So these are these accounts basically. I hope you got the point. So they have international branches, sometimes they have international tie-ups, or they may have international accounts sometimes. Now this is important, guys. जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है ग्लोबलाइजेशन में, राइट, सो ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग्स गुड कल्चर. हम योगा यहाँ करते हैं, पूरा वर्ल्ड योगा कर रहा है, दिस इज ग्लोबलाइजेशन. They were eating McDonald's, now we are also eating McDonald's. Again, it's the outcome of globalization. हम लोग इंडिया में कुर्ता पजामा डालते हैं, now I'm wearing a t-shirt. Again, we are following their culture and they are following our culture. So what is happening over here, guys? That globalization makes the world one, firstly, and all the good things of the world are followed and copied by the people of India, basically, or people of the world. The best things are acquired by all the citizens, citizens of the world, I would say. Now, culture flows in, flows out. Businesses flows in, flows out, means exports and imports. Apart from this, capital also flows in. पैसा भी आता है, पैसा आता है, जाता है, आता है, जाता है. So that could be for investments, that could be for stock markets. So this is international capital flow, FDI and FII. Now let me give you a perspective. And I want you to think as well. India में McDonald's आया, is it FDI or FII? First question. Second question, फॉरेन के लोग इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं. पीपल सिटिंग इन यूएसए, दे इन्वेस्ट इन इंडियन स्टॉक मार्केट. व्हाट इज दैट, एफडीआई और एफआईआई? एंड व्हाई डू दे इन्वेस्ट इन इंडिया? क्या अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स खत्म होगी क्या? व्हाई डू दे इन्वेस्ट? नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, द राइट अप्रोच वुड बी, जब जब इंडिया में पैसा आता है बिजनेसेस में, लाइक फॉर एग्जांपल सैमसंग ने अपना यहाँ पे कोई स्टोर खोला, दैट इज एफडीआई. This is called as foreign direct investment. Means वो अपना यहाँ प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे, प्लांट के बाद मैन्युफैक्चरिंग होगी, लोगों को जॉब मिलेगी. दिस इज एफडीआई, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स इंडिया में आया, इट वॉज अ फॉरेन ब्रांड, दे स्टार्टेड देयर शॉप्स ओवर हियर, पीपल वर एम्प्लॉयड, दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग burgers and all that. That is FDI. It brings infrastructure, it brings jobs, it brings technology over here. On contrary, FIIs are just cash flowing in. Foreign institutional investments means बाहर का पैसा आया, इंडिया की स्टॉक मार्केट में लग गया, that is also FII. बाहर की किसी कंपनी ने इंडिया की किसी कंपनी को फंड दे दिया, या उसकी कंपनी में इक्विटी खरीद ली. फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे आपने यू माइट हैव सीन शार्क टैंक इंडिया. तो शार्क टैंक्स में इंडियन कंपनी इंडियन लोगों से पैसा लेती है, राइट? जस्ट इमेजिन वही इंडियन लोग किसी बाहर वाली कंपनी से पैसा ले लें इक्विटी में. सो दैट इज FII, बिकॉज ओवर हियर दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी एम्प्लॉयमेंट, दे आर नॉट क्रिएटिंग एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर जस्ट इन्वेस्टिंग. सो FII, जहां आई डबल लगेगा, याद रखना उसको, FII इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स के लिए है. दिस मनी विल कम इन जब उनको लगेगा हाँ हमारा प्रॉफिट बन गया, पैसा लेके चले भी जाएंगे. वेयर एज FDI इज बेटर बिकॉज इट विल ब्रिंग इट विल ग्रो आवर जीडीपी. फर्स्टली, अगर यहाँ मैकडोनल्ड्स आया, जीडीपी बढ़ी उससे. हमारे यहाँ पे अगर टोयोटा की कंपनी खुली, मारुति आई, होंडा आया, all these companies, when they came here, Samsung आए, they started their manufacturing, it helped and it grew our GDP as well.
ऑन कॉन्ट्रेरी किसी ने इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, हाउ डज इट मैटर टू मी? Yes, money comes in, government gets tax. Yes, we earn out of that. But the thing is that it is very liquid. It will come in, it will go out any point of time. Whereas FDI is a long-term thing. So at FDI is stable. FDI brings jobs. FDI brings infrastructure. Whereas FIIs are quick. And मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था. These are prone to sudden exits. एकदम से पैसा आता है, एकदम से जब जाएगा, तो जैसे अभी रुपी नीचे गिर रहा है, द मेन रीजन इज पीपल आर विड्रॉइंग देयर डॉलर्स, दे आर टेकिंग द डॉलर्स बैक आउटसाइड द कंट्री. सो उससे रुपी नीचे गिर रहा है, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है, बिकॉज मनी फ्लो इज आउटसाइड. आई होप यू गेटिंग द पॉइंट. यहाँ पे एक और चीज जो समझने वाली है, why American people or why the people from these developed nations they invest in country like India. Let's see, the thing is that वहां पे इन्वेस्टमेंट्स में स्टेबल रिटर्न मिलता है. मींस द रिटर्न्स आर स्टेबल बट नॉट हाई. इन इंडिया रिटर्न्स में नॉट बी स्टेबल बट द रिटर्न्स कुड बी वेरी हाई. मेरा बोलने का मतलब है, इंडिया जैसी डेवलपिंग नेशन में ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा होने के चांस है. वहां पे ग्रोथ रेट इतने नहीं मिलते उनको. सो दीज पीपल दे इन्वेस्ट इन इंडिया. सो दीज आर कॉल्ड एज FIIs. बट ये पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट बना के निकल भी जाते हैं. सो दैट इज वाई इट्स वेरी अब्रप्ट, इट्स वेरी इंस्टेंट. तो वो एकदम से ऊपर जाता है स्टॉक मार्केट, नीचे क्रैश भी होता है. So this is FDI versus FII. I believe both are good. FDI is much better than FII, but as such both are good for India as such. Now coming to Forex. Forex का नाम ही फॉरेन एक्सचेंज को मिला के बना है. मीन्स सी, हमेशा आप कभी ना कभी घूमने कभी जाओगे, when you go abroad you will exchange the currency, then you will buy goods, right? It is a constant process, right? So it is a decentralized market. फॉरेक्स का मतलब होता है वो पॉइंट्स जहां पे फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करनी पड़े. फॉरेन एक्सचेंज करेंसी किस किस को एक्सचेंज करने पड़ेगी? नंबर वन, फॉरेन पीपल हु आर ट्रेवलिंग टूरिस्ट, government diplomats, banks, international banks, traders as well. People will do arbitrage, वहां से लेके करेंसी वहां भेज दी. That is also a good way, right? इसके अलावा who will use the forex? Importers and exporters. The thing is that international trade and for international existence itself means अगर मुझे दुनिया में जीना भी है and my existence, I deal with people who are throughout the world. Definitely, I need to exchange the currencies for the better transactions, right? So this is forex basically, right? And for international banking, I told you international banking makes it bit faster, makes it efficient. Now, forex markets, they are very important for international trade, imports and exports. It supports flow of growth and economy. Flow of growth means पैसा बाहर से आएगा, capital inflow, पैसा बाहर जाएगा तो growth होती है उसे, it brings growth in the nation. It helps the currency risks as well, like future options. See, our forex को whenever you trade, though in India forex trading is not allowed because you need to do it in huge volumes. बहुत ज़्यादा, the margins are very very less, 0.11 पैसा, like that. For example, like that in पैसाs if I give you, तो उसको करोड़ों में बनाने के लिए you need to invest in huge volumes of money. So the thing is that over here we the in forex we can use spot price, we can use forwards, we can use options, we can use various contracts as well, right? Now forex markets operates 24 hours, though it's not centralized something sitting at like SEBI or like NSC, they have offices. It's not like that. It is decentralized market, right? कभी ना कभी कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो ट्रेवल कर ही रहा होगा. इंटरनेशनल ट्रेड कहीं ना कहीं तो हो ही रहा होगा. मीन्स अगर आज आई एम इन इंडिया, मे बी समवन इज ट्रेवलिंग इन अमेरिका, मे बी इन यूरोप, मे बी इन सम अदर कंट्री. तो ये लगातार होता रहता है. एंड कहीं दिन हुआ कहीं रात होगी. सो दिस ट्रांजेक्शन कीप्स ऑन गोइंग थ्रू आउट. दैट इज वाई इट इज 24 आवर मार्केट, राइट? सो दुनिया तो चल ही रही है, राइट? 24 आवर्स. अगर यहाँ रात है कहीं और दिन हो गई होगा तो वहां पे ट्रांजेक्शन चल रही हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहे हैं. सो इट इज बेसिकली ट्रेड अकर्स ओवर द काउंटर. मीन्स अगर मैं अमेरिका गया तो वहीं पे मैं खरीद लूंगा डॉलर्स, खरीद के फिर वापिस आ जाऊंगा, राइट? सो अब अमेरिका जब मैं गया, आई एम बाइंग डॉलर्स, बट इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, इंडिया में बी हैविंग नाइट टाइम, सो 24 आवर्स. जब अमेरिका इंडिया में आया होगा वहां पे रात होगी, तो यहाँ पे कोई ना कोई डॉलर्स खरीद रहा होगा. इट्स नॉट सेंट्रलाइज, इट्स वर्किंग थ्रू आउट. तो जो करेंसी पेयर्स होते हैं गाइस, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा. हमें इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन टू करेंसी पेयर्स, यूरो USD. USD मींस जापानीज येन,
ग्रेट ब्रिटेन पाउंड टू यूएसडी। हमेशा जो फोकस होता है, द मेन फोकस शुड बी एट द डिनोमिनेटर। ये है यूएसडी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू यूरो, ये है जापानीज येन की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू यूएसडी। जब भी कोई आपसे पूछे, whenever you see such kind of pairs, whenever you see such kind of pair, just focus on the denominator, that's it। आंखें बंद कर लो, बस डिनोमिनेटर में, नीचे वाली वैल्यू में। नीचे वाली वैल्यू means this is value of USD with respect to euro, this is value of Japanese yen with respect to USD, this is value of USD with respect to Great Britain pound। so जो नीचे वाला होगा वो उसकी वैल्यू दी होती है। and how do you calculate these terms? There are many other terms as these, in this, the basic and the simple concept that is used is fractions of, जो आपने पढ़ा होगा ना मैथमेटिक्स में, a divided by b multiply by like that, a by b multiply by b by c, तो b से b कैंसिल हो गया तो a by c। so you will use the same logic, nothing else। तो ये सिर्फ फ्रैक्शन वाले लॉजिक पे ही काम करती है। यू कैन कट एंड यू कैन स्ट्रेट अवे कैलकुलेट द वैल्यूज। इफ मैथमेटिकली आप करके देखोगे तो इफ ए is euro, b is USD, again b is USD and c is Great Britain pound, तो a by b divided by b by c, तो b से b कैंसिल तो a by c, that's it। तो उन दोनों की वैल्यू आ जाएगी। so it works on simple mathematical problems, simple mathematical जो अलजेब्रा हमने उस टाइम स्कूल डेज में किया होता था, दैट्स इट। आप उसको ट्रांसपोज कर सकते हो वैल्यूज कैन, यू गेट द आंसर्स। आई होप यू गॉट द पॉइंट। हर कंट्री में यू माइट हैव हर्ड दैट कभी डॉलर ऊपर जा रहा है, कभी डॉलर नीचे जा रहा है, कभी इंडियन रूपी ऊपर कभी नीचे। हु इज रेगुलेटिंग दिस? हाउ ऑल दीज थिंग्स आर वर्किंग? फर्स्टली, ये हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, इज समवन सिटिंग ओवर देयर, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? एंड चाइना क्या फॉलो करता है, इंडिया क्या फॉलो करता है, व्हाट दीज वेस्टर्न कंट्रीज फॉलो, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट इन दिस slide। There are three types of currency exchange systems, basically. So as such, there are 9 types, but those 9 types are also subheading of these systems. सबसे पहले होता है फिक्स्ड, कि किसी कंट्री ने अपनी करेंसी फिक्स कर ली, जैसे चाइना ने किया है। चाइना में $1 इज इक्वल टू 3 युआन, उन्होंने फिक्स कर दिया है बस। सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ चाइना, दे फिक्स्ड इट, इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड। The term is called as pegged. They have pegged it, right? But for this, they have to keep 100% backing of either forex or gold। को खरीदना पड़ता है डॉलर, उतना जितना उन्होंने करेंसी प्रिंट की उतनी ही उनको बैकिंग देने पड़ती है, right? Same happened in Malaysia as well many years back, but I hope you are getting the point। This is fixed। फिर आता है floating। Floating is something which takes place with demand and supply। अगर डिमांड बढ़ गई डॉलर की तो ऊपर, नीचे चलेगी तो नीचे। नो वन इज रेगुलेटिंग इट, इट इज जस्ट डिमांड एंड सप्लाई। तो फिक्स्ड में कौन रेगुलेट कर रहा था? इन फिक्स्ड इट वाज द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक हु वाज रेगुलेटिंग। इन फ्लोटिंग व्हाट इज हैपनिंग? इन फ्लोटिंग इट इज just demand and supply, pure demand and supply, nothing else। Now comes the third one। India is always mixed। We have the mixed economy, सबका best, so we have the mixed system of the currency as well। It is मैनेज्ड फ्लोट, दोनों का थोड़ा थोड़ा डाल दिया। फ्लोट मतलब खुद चल रहा है, फ्लोट इन द सेंस डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन साथ में देयर इज अ वर्ड मैनेज्ड, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट और आरबीआई थोड़ा थोड़ा मैनेज करती है। सो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री प्लस फ्लोट, बोथ। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड सॉरी एंड फ्लोट, बोथ। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट वैसे तो चलने देती है, गवर्नमेंट डजंट इंटरफेयर दैट मच, बट जब करेंसी बहुत नीचे गिरने वाली हो धड़ाम से, तो आरबीआई आता है स्ट्रेट अवे, इट विल स्टार्ट बाइंग रुपी और इट विल स्टार्ट बाइंग डॉलर्स, ताकि करेंसी इतनी धड़ाम से नीचे ना गिरे। अभी क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल करेंसी रुपीज फॉलिंग राइट, एंड डॉलर इज appreciating and dollar is moving out of the nation, capital outflow is taking place, right? Capital बाहर जा रहा है कंट्री से, so because of this dollar is appreciating, rupee is depreciating। So what RBI is doing, rupee एकदम से धड़ाम से नीचे ना गिरे, because otherwise it will really impact the exporters and importers। What they are doing, RBI is trying to buy more and more dollars, sorry, sell more and more dollars। डॉलर ज्यादा सेल होगा तो सप्लाई बढ़ेगी, तो रुपी इतना जल्दी नीचे नहीं गिरेगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट।
सो दिस इज हाउ आरबीआई का जो मेन रोल है यहाँ पे, टू जस्ट कीप एन आई, अ वॉच डॉग, कि एकदम से सब ना हो, इट शुड बी स्लो एंड स्टडी विद अ कांस्टेंट पेस. आई होप यू गॉट द पॉइंट. सो फ्री फ्लोट इज अनमैनेज्ड फ्लोट को डर्टी फ्लोट भी बोलते हैं, which takes place in India, fixed in China, as I told you. Now guys, there are few countries, this is interesting, huh? There are few countries जिन्होंने कहा कि यार हम तो रुपी रुपी रखेंगे नहीं अपनी करेंसी, जिन्होंने अपनी करेंसी ही गायब, मतलब दे, फॉर these countries, they don't have their own currency actually. But I want to say, जैसे इंडिया में रुपी है, पाकिस्तान में रुपी है, चाइना में युआन है, बट there are few current countries guys, they don't have their currency, वो डॉलर ही एक्सेप्ट कर लेते हैं. So this is called as dollarization. इसको नाम से मत लेना कि डॉलराइजेशन मींस डॉलर्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस टाइम डॉलर्स ही होते थे तो इन लोगों ने डॉलर एक्सेप्ट कर लिया, तो इस टर्म को आगे यूज कर लिया कि इवन टुडे दिस टर्म इज यूज्ड. बट यहाँ पे मतलब ये है, दे आर फ्यू कंट्रीज हु स्ट्रेट अवे अडॉप्ट द करेंसी ऑफ अदर कंट्री. इट इज जस्ट फॉर टीचिंग, डोंट टेक इट पर्सनली, एंड जस्ट अ डिस्क्लेमर, इट्स जस्ट अ जोक. फॉर एग्जाम्पल टुमारो नेपाल बोल दे कि भाई हम तो इंडिया के रुपी को ही मानेंगे, एंड पाकिस्तान भी ऐसा बोल दे कि वी विल कंसीडर इंडियन रुपी एज आवर करेंसी, दैट इज डॉलराइजेशन. जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री या किसी बड़े कंट्री की करेंसी को एक्सेप्ट कर ले. सो इक्वाडोर में ऐसा है, मींस दे डोंट हैव देयर ओन करेंसी. इफ यू गो टू दैट प्लेस, डॉलर्स, डॉलर इज देयर करेंसी. अब यहाँ पे एक नुकसान रहता है, देयर इज अ, इट्स अ गुड थिंग इन द सेंस, लोगों का ट्रस्ट है डॉलर में, फाइन. इंटरनेशनल ट्रेड में अच्छा है, अगेन फाइन, बिकॉज एंटायर इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस इन डॉलर्स ओनली. बट देयर इज अ फ्लॉ ओवर हियर. अब यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी तो है ही नहीं इनकी, करेंसी नहीं है जब आपके पास, हाउ कैन यू कंट्रोल योर मनी सप्लाई. सो मॉनेटरी पॉलिसी जो अमेरिका बनाएगा वही इनको फॉलो करने पड़ेगी. सो अगेन दे लॉस्ट द कंट्रोल इन मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग. दिस इज स्टेप नंबर वन. स्टेप नंबर टू, वन अनदर ड्रॉबैक, अगर बिजनेस साइकिल दोनों कंट्रीज के सेम हुए तब तो इट्स गुड, कि वहां पे ग्रोथ, यहाँ पे भी ग्रोथ. लेकिन अगर बिजनेस साइकिल ऑपोजिट हो गए, बिजनेस साइकिल्स बिकम्स ऑपोजिट, फॉर एग्जांपल वहां पे था इन्फ्लेशन, हाई मनी सप्लाई, यहाँ था रिसेशन, इट विल बी डेवस्टेटिंग. क्योंकि वहां पे मनी सप्लाई में वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी में वो मनी सप्लाई को रोक देंगे. यहाँ पहले ही रिसेशन था आपकी कंट्री में, वहां मनी सप्लाई आई नहीं, हो और ज्यादा रिसेशन में जाएगा. इट विल सिंक इन रिसेशन बैडली, बिकॉज मनी सप्लाई रुक गया, अमेरिका ने मनी सप्लाई रोक दिया. नाउ आपके यहाँ इन्फ्लेशन था, फॉर एग्जाम्पल यू वर हैविंग हाई इन्फ्लेशन, और अमेरिका ने मनी सप्लाई बढ़ा दी मॉनेटरी पॉलिसी में, बिकॉज वहां रिसेशन था, यहाँ इन्फ्लेशन ग्रोथ, वहां रिसेशन. तो वो क्या करेंगे, मनी सप्लाई बढ़ाएंगे, तो मनी सप्लाई एट द एंड आपकी कंट्री में आएगी एंड इट विल ब्लास्ट. तो आपका इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, इट विल गो आउट ऑफ कंट्रोल. सो दिस थिंग ओनली वर्क्स, वन करेंसी सिस्टम ओनली वर्क्स, one when you have same, you can say, I would say, same business cycles. It's very important, monetary unions and economic unions. I would like to share a small diagram, or maybe I would like to say a small world map over here. I want you to focus guys. हम लोगों ने जो अभी चीज करनी है, that is what is monetary union and what is economic union, right? Economic union तो आप समझ रहे हैं, you are understanding this thing, like to enhance trade, countries become friends of each other. They make few unions, right? You might have heard the name multiple times as well before. So see, for example, this is again a map of country. So all Africa, let's give example of India, Nepal, best example. नेपाल वाले लोग इंडिया आ सकते हैं, यस. नेपाल वाले लोग यहाँ के पढ़ाई कर सकते हैं, यस. कैन दे स्टार्ट अ बिजनेस हियर, यस. कैन दे earn money and go back, absolutely, no one is stopping them. Can we sell our products there, absolutely. So this is economic union. There is free flow of capital, यहाँ से वहाँ पैसा भी जाता है, पैसा आता है. Free flow of goods, पैसा जाता है, पैसा आता है. Free flow of people. So this is economic union. India, Nepal, best example. Buses चलती हैं. No one is asking you visa, no one is asking you, no documents. You just go there and थोड़ा बहुत documents चलता है, but as such there is full freedom for them, for us, right? The same thing is guys with Europe.
दिस इज यूरोप, राइट? यहाँ पे जितने भी कंट्रीज हैं, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इट इज जस्ट लाइक इंडिया एंड नेपाल। आप कहीं भी जाओ, सुबह फ्रांस में नौकरी करो, शाम को वापस आ जाओ स्पेन में, फाइन। आप जर्मनी में जॉब करते हो, आप पोलैंड जाना चाहते हो, गो देयर, सुबह जाओ शाम को वापस आ जाओ। These countries are small. Capital flow is easy. Goods flow is easy, right? People movement is easy. No documents, that much documents required. So this is called as economic union. So there are multiple economic unions in the world. In Africa, there is also one economic union, African Union. There is SARC. SARC in South Asian countries ने अपना group बनाया है. ASEAN is also there, right? G20, like that. There are multiple unions which are being made, right? Now economic unions जहाँ free flow होता है, this is higher level. अब यहाँ पे एक और वर्ड था, monetary union. अब guys, हम इंडिया नेपाल का एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अगर कल को नेपाल बोल दे, अभी जो सब कुछ फ्री है, आई कैन गो देयर, दे कैन कम हियर, बट स्टिल करेंसीज आर डिफरेंट। नेपाल की अपनी करेंसी है, मेरी अपनी करेंसी है, वी हैव डिफरेंट करेंसी, दो दे डू एक्सेप्ट इंडियन करेंसी, बट स्टिल इट इज डिफरेंट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कल को अगर नेपाल बोल दे, अगेन इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टीचिंग एग्जांपल, राइट? If tomorrow Nepal says that we we consider and will take Indian rupee as our currency as well, तो उन्होंने भी वही करेंसी मान ली, firstly. So the not two countries are having just one single currency, that is Indian rupee. This is one thing. और नेपाल साथ में बोल दे कि हम मॉनेटरी पॉलिसी भी इंडिया वाली ही चलाएंगे, तो आरबीआई अब सेंट्रल बैंक होगा नेपाल का भी। सो बोथ द कंट्रीज आर हैविंग वन सेंट्रल बैंक नाउ। तो अब डिसीजन मेकिंग इंडिया ही करेगा, नेपाल का भी। सो इट बिकेम मॉनेटरी यूनियन। जब करेंसी भी सेम हो गई और आपका सेंट्रल बैंक भी सेम हो गया, दिस इज व्हाट हैपेंड इन यूरोप। यूरोप में करेंसी यूरो चलती है सबकी। तो आपके पास यूरो है, जर्मनी में भी चलेगा, फ्रांस में भी चलेगा। सो दिस इज अ इकोनॉमिक यूनियन एंड दिस इज अ मॉनेटरी यूनियन एज वेल। तो ये दोनों चीजें हैं, राइट? आई होप यू गॉट द पॉइंट। थोड़े टाइम पहले आपने सुना होगा, यू माइट हैव हर्ड दिस थिंग, दैट यूनाइटेड किंगडम ब्रेक्सिट हुआ, यूनाइटेड किंगडम यहाँ से निकल गया है। सो यूनाइटेड किंगडम इज नाउ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक यूनियन बट नॉट द पार्ट ऑफ मॉनेटरी यूनियन। तो इन सारे कंट्रीज की एक कांस्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी बनती है। दे हैव वन कांस्टेंट मॉनेटरी पॉलिसी। यूरोपियन सेंट्रल बैंक, जो पूरे यूरोप का सेंट्रल बैंक है, उसमें लेकिन इन सारे कंट्रीज की थोड़ी थोड़ी पार्टिसिपेशन रहती है। जैसे हमारा पार्लियामेंट है, वैसे वहां पे दे हैव द राइट टू वोट, और किस डायरेक्शन में मॉनेटरी पॉलिसी लेके जानी है, दे हैव दैट फ्रीडम बेसिकली। बट ओवर हियर द थिंग इज दैट दे हैव द सेम बिजनेस साइकिल्स। अगर किसी एक कंट्री का बिजनेस साइकिल उल्टा हुआ, तो वो कंट्री, दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट कंट्री टू सर्वाइव। आई गिव यू जस्ट द एग्जांपल ऑफ इक्वाडोर। बिजनेस साइकिल इन सबके सेम है, तभी ये यूरोपियन यूनियन वाला कंसेप्ट काम करता है, अदरवाइज इट डजंट वर्क इन अ गुड वे। आई होप यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। ओके, so this is monetary union, this is economic union, it's done. Dollarization is done. Just give me a moment, guys. So some countries do have dual currencies as well, like Cambodia, Zimbabwe. They have their own currency, and they accept the currency of dollar as their currency. So दोनों currencies वहाँ चलती हैं. So again, it has uh, stability, it has more trust, because dollar के ऊपर तो सभी का trust है. But disadvantage यही है, because monetary policy becomes difficult to manage, because it's very difficult to manage both the currencies. एक करेंसी संभालना मुश्किल है, दो करेंसी संभालना तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एंड जो कंट्रीज अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट छोड़ के दूसरे कंट्री की वो करेंसी एक्सेप्ट करते हैं, लाइक इक्वाडोर, इन डॉलराइजेशन, इट्स नॉट गुड गाइस, इट डजंट वर्क इन अ लॉन्ग रन। ये सिर्फ वही कंट्री कर पाते जो बहुत छोटे थे, who are not powerful, who are not good enough. Otherwise, it's more advisable to have their own currency, right? तो many times you might have heard this thing कि हमें फॉरेन में सेटल होना चाहिए कि इंडिया में, इंडिया इज बेटर और फॉरेन इज बेटर। इफ यू वांट टू गो टू फॉरेन, व्हाई यू शुड गो टू फॉरेन? जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ सर पैसा ज्यादा मिलेगा, ओके, पर पैसा ज्यादा है तो इट मीन्स खर्चा भी ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन इज ऑल्सो हाई इन दोज कंट्रीज। और आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड
कि इंडिया का 1 लाख रुपया वहां पे क्या ही कर पाएगा। मीन जस्ट नो इतना तो एक रूम का रेंट हो जाएगा। तो वहां का 2 लाख रुपया, इंडिया का 2 लाख रुपया वुड इट वुड बाय वेरी लेस स्टफ ओवर देयर, वेयर एज इंडिया में 50,000 में 1 लाख में यू कैन हैव अ किंग साइज लाइफ गाइस। 50,000, 60,000, 80,000 इज गुड इनफ मनी, राइट? नाउ गाइस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एक हमारे पास ना करेंसीज जो होती हैं, फ्लक्चुएशन, माइट हैव हर्ड रुपीज फॉलिंग, डॉलर इज अप्रिशिएटिंग। तो $1 84 के आसपास पहुंच गया है। एंड यू नो बट गाइस, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ द करेंसी। इट इज changing because of demand and supply, because of market sentiment, similar to the stock market, the way it happens in stock market. But on contrary, I would like to add over here, there is another currency rate, that is PPP, purchasing power. बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो खरीद क्या सकता है? Let me give you a practical example over here straight away. अब जैसे यहाँ पे हम लोग आते हैं, सो इंडिया का आपको पता है, यू ऑल नो राइट नाउ $1 इज इक्वल टू 84 रुपी. That is demand and supply, market value. But if I say in PPP, $1 is equal to 20 Indian rupee. Very interesting. मतलब इंडिया का जो 20 रुपए से हम खरीद सकते हैं, वहां पे उतने का $1 है. इट्स गुड इनफ. हम लोग चिल्लाते हैं ना कि सर वो तो बहुत अच्छे हैं, दे वेरी एडवांस, हमारा इंडियन रुपी गिर रहा है. इट जस्ट द मार्केट प्राइस. दिक्कत तब आनी चाहिए व्हेन दिस स्टार्ट्स फॉलिंग. मतलब इंडिया के रुपए की परचेजिंग पावर इज स्टिल द गुड, मींस वी कैन बाय इक्वलेंट अमाउंट ऑफ स्टफ एट 20 रुपी, जो वहां पे $1 से मिलता है. हाँ, वो जो मार्केट वैल्यू है, डेट इज फॉर द कन्वर्जन रेट्स गाइस. बट अगर आपको वहां पे लाइफस्टाइल देखना है, तो इंडिया का 20 रुपीज इज जस्ट इक्वल टू दैट $1 ऑफ यूएसए. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट ओवर हियर. बट आई वांट टू से देयर आर टू टाइप्स ऑफ करेंसी सिस्टम्स. वन इज मार्केट, another is purchasing power. आप सच में खरीद क्या सकते हैं? That is why the purchasing power is given over here. So market value is nominal value which is used in official exchange rate. आप यहाँ से वहां जाओगे तो this is something you will be using, right? And it affects demand and supply and it keeps changing. Whereas purchasing power is something which you can really buy. इसका ना एक मैक, बिग मैक इंडेक्स बोलते थे. इट्स वेरी फनी कि एक बर्गर पूरे, एक मैक, मैक जो होता है यूएस का, मैकडोनल्ड्स का, वी माइट हैव गॉन टू मैकडोनल्ड्स, देयर इज अ बर्गर कॉल्ड मैक. सो वो मैक कितने का आएगा पूरे वर्ल्ड में? इंडिया में कितने का है, चाइना में कितने का? एंड यू जस्ट सीइंग दैट यू कैन थिंक, अच्छा, दिस इज द पीपी, परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी. आई होप यू गॉट द पॉइंट. नाउ लेट मी शो यू मोर. दिस इज फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान में थोड़ा डाउट है. इट्स बैड फॉर पाकिस्तान. इट्स 73 फॉर पाकिस्तान. I hope you got the point. For India, it's just 20 rupee. It means it is not good for that. So for Iran, it's 147. मतलब वहां का 147 रुपए $1 के बराबर चीजें खरीद सकता है, राइट? इंडिया का 20 रुपया भी खरीद लेगा. सो if I give you answer to this question कि फॉरेन में जाना चाहिए या नहीं, see guys, foreign, it's good to get established in these countries like America, European countries, for better lifestyle. Per capita income in those countries are good. Happiness index and all other indices are good in these countries because they have good standard of living. बट अगर आप बोलो कि सिर्फ पैसे के लिए, तो गाइज वहां पे खर्चा बहुत रहता है. एक्सपेंडिचर इज क्वाइट हाई. परचेजिंग पावर इज समथिंग विच यू नीड टू सी. सो व्हाट आई वांट टू से, जो चीज यहाँ सस्ती आ जाएगी, वहां पे इट विल बी वेरी कॉस्टली. सो यू नीड टू अर्न अकॉर्डिंगली सो दैट यू कैन बाय दोज थिंग्स. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. ऑलराइट. तो ये इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं ये रेट्स? सो दीज आर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स एज वेल, मींस interest rates of the monetary policy, because of the political stability and instability as well. Means you might have seen nowadays so much fluctuation is taking place in dollars because the political there is huge fear in the minds of people, or I would say mind in the market basically, that what is going to happen in America. So that's why dollar is fluctuating so much. Whereas Swiss franc is very stable because it is the most stablest country in the world. So what I want to say, uh,
The thing is that these fluctuations are just equivalent or just similar to stock markets. जैसे जैसे स्टॉक मार्केट जिन जिन रीजन से होता है वैसे ये भी होता है, बट दीज रीजन आर क्वाइट ग्लोबल, क्वाइट इंटरनेशनल. I hope you got the point, everybody. Now, this is again very important concept you need to understand. See, depreciation and devaluation. These terms seems quite similar, but they have different meanings. डेप्रिशिएशन होता है जब करेंसी खुद नीचे गिर रही है मार्केट फोर्सेस की वजह से, बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. नो वन इज इन्वॉल्विंग और गेटिंग इन्वॉल्व और ट्राइंग टू कंट्रोल इट, इट्स हैपनिंग ऑटोमेटिकली. Devaluation is a word which is used when central bank और गवर्नमेंट खुद करेंसी को नीचे गिराए फॉर बेटर एक्सपोर्ट्स. बेस्ट एग्जांपल चाइना. चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा करने के चक्कर में अपनी करेंसी को जानबूझ के कम दिखाता है, दो इट कुड हैव वेरी हाई करेंसी. बट द थिंग इज दैट वो जानबूझ के कम इसलिए दिखाता है, द मेन रीजन इज दैट सो दैट एक्सपोर्ट्स गेट इंक्रीज. सो डिवैल्यूएशन होता है जब गवर्नमेंट खुद उसको करे या सेंट्रल बैंक करे, whereas depreciation is automatic, means demand and supply. So appreciation when the prices goes up automatically because of demand and supply forces. I hope you got the point, everyone. Now again, few international systems: socialism, communism, capitalism, and mixed economy. See guys, socialist countries are those countries, like these countries are socialist. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो, so the countries, these countries, Finland, Sweden, Norway, these countries, I would say Switzerland, these countries are socialist countries. ये वो कंट्रीज होता है जहाँ सब कुछ फ्री होता है, सबके लिए होता है. मीन दीज आर द रिच पेरेंट्स. ये लेट्स गिव यू एग्जांपल ऑफ अ फैमिली. आप इमेजिन करो ये वो फैमिली है जिसके पास बहुत पैसा है, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, नाउ दे स्पेंड एवरीथिंग ऑन द चिल्ड्रन. उनको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बच्चों को सब उनको मिलता है बिना मांगे. सो दीज आर द कंट्रीज सोशलिस्ट. ये सोसाइटी के लिए, नाम ही सोशल है तो दे लिव फॉर द सोसाइटी. When a girl get pregnant, she gets 6 months leave, something like that. You get, when if you don't have job, you get, आपको थोड़ा भत्ता मिलता है नौकरी में आउट रहने का. ओल्ड एज में आपको नर्सिस एंड डॉक्टर्स मिल जाएंगे, एजुकेशन फ्री, बस सर्विस फ्री, यू नो योर ओल्ड पेरेंटिंग टेक केयर वो खुद करेंगे, बच्चों की पढ़ाई फ्री. सो एवरीथिंग इज फ्री इन दीज कंट्रीज. सो दीज आर सोशलिस्ट कंट्रीज. यहाँ टैक्सेस बहुत हाई होते हैं, फ्री करने के लिए आपको लेना भी तो पड़ेगा. टैक्सेस आर वेरी वेरी हाई, बट दे डिलीवर एज वेल. So these are socialist. I hope you got the point, everybody. Now comes the communist countries. Communist countries होते हैं ये वो parents है, strict parent. This is, you just imagine as strict parenting, जहाँ पे पेरेंट्स के पास होता तो है बट वो बच्चों को ऐसे देते नहीं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई ब्रॉट चॉकलेट्स, तो वट आई विल डू, मैं बच्चों को नहीं बोलूंगा कि आप खुद खा लो, मैं बोलूँ मुझे दो, आई विल डिस्ट्रीब्यूट टू यू. कम्युनिस्ट कंट्रीज आर दोज कंट्रीज वेयर एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट लोगों को बांटती है खुद, बट गवर्नमेंट ऐसे नहीं है कि सबको कुछ भी दे देगी. गवर्नमेंट पूरे प्लानिंग के साथ देती है, बट पीपल डोंट हैव द फ्रीडम टू चूज. गवर्नमेंट थिंक्स, इसका ये मतलब है गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि इनके पास इतना नॉलेज नहीं है, इनके पास इतनी वो नहीं है, समझ नहीं है कि कर पाएंगे. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू कैपिटलिस्ट. कैपिटलिस्ट मींस एवरीथिंग इज फ्री. फ्री मींस फ्री इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग. ये वो पेरेंट्स हैं जो ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को सब छूट है, बेटा कोई फैसला लेना है खुद लो, बच्चा कुछ खर्चा करना है कर लो, नो नीड टू आस्क, कंप्लीट फ्रीडम, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से चलते. दीज आर कैपिटलिस्ट कंट्रीज, राइट. इंडिया इज अ मिक्स्ड नेशन, मींस वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स. सोशलिस्ट जब हम राशन या लड़कियों की पढ़ाई फ्री में करवा रहे हैं, डेट इज सोशलिज्म. कम्युनिज्म जब गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर लिया बैंक्स में, पीएसयू बैंक्स और लाइक फॉर एग्जांपल और नवरत्न, तो डेट इज कम्युनिज्म. कैपिटलिज्म, we do have stock market, we do have equal opportunity for all the businesses to grow, that is capitalism, right? So this is mixed economy. China state capitalism, it is interesting. China में state is the business, state government को बोलते हैं, government is running the business. तो चाइना में it is the state who is executing and running the business. It means चाइना में जैसे हम लोगों का यहाँ पे होता है एसडीएम या डीसी, वहां पे भी है, but they are helping local people, establishing local factories. They are buying the stuff from them and they are selling to the central government, and central government is helping in exports and imports. So it is the entire focus of the government
is to produce and sell. तो चाइना itself, चाइना एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है. जस्ट इमेजिन दिस इन दिस वे, जहाँ गवर्नमेंट ही बिजनेस चला रही है. द मेन ऑब्जेक्टिव of गवर्नमेंट इज टू प्रोड्यूस मोर एंड सेल मोर. सो दिस इज चाइना स्टेट. स्टेट का मतलब यहाँ पे हिमाचल पंजाब वाला स्टेट नहीं है. इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेट. चाइना की सेंट्रल गवर्नमेंट ही बिजनेस एग्जीक्यूट कर रही है. सो दैट इज चाइना ओन्ड, स्टेट ओन्ड कैपिटलिज्म, स्टेट ओन्ड बिजनेसेस.